ये टक की बात तेरी आ रही है भाई राकेश। आई होप मैंने सब बंद करके रखा हुआ है, तो मेरा तो इतना बचता रहता है। Great. I think, Varinder bhai, we can start. We are already live. So great. Really, thanks. सबसे पहले तो, and good evening, and as always, Jai Mata Di, Varinder bhai. Really a pleasure to host you as always, actually, and getting so many messages and calls that we are हमेशा pleasure रहता है Varinder bhai को सुनना. So really a pleasure to host you as always, and investors are really looking forward to hear you live on your views on markets in general, and जो आज अपना theme है manufacturing. So just to introduce Varinder bhai formally, Varinder Bansal have over 15 years of work experience. For people who are not aware, I'm sure everybody knows Varinder bhai. He's a very popular face, and he has been always been into equity research. And prior to the foundation of Omkara Capital, he was a fund manager at an AMC. And prior to that, a corporate editor and head of research at CNBC TV18. So it's my pleasure to have Varinder bhai today, and let's join us to learn more from Varinder Bansal, and let's ask all the questions what we have in our mind about the investment opportunity in the manufacturing theme, which Varinder is super excited to share with all of us today. So the structure of the session today will be Varinder will be sharing his insights and his research, what he has done over the past couple of months on manufacturing sector for the first 20-25 minutes. And then we will have a Q&A session. So definitely you can keep on asking questions on the live feed. Our team will be picking up those questions and we will be asking them on your behalf to Mr. Varinder Bansal. So Varinder bhai, over to you. The floor is all yours, and super excited to hear you and pick up your brains on manufacturing sector. Well, thank you, Rakesh, smallcase, and of course Omkara, for giving me this opportunity. First, few disclaimers. I will try and put the slide also. I hope all of you can see the slide. See the slide here, right? You can see the presentation. Yes, perfect, Varinder bhai. We can keep it on slideshow. Perfect. Lovely. So, thank you everyone for joining this today. I promise that मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा और जितना कम समय में समझा सकूँगा, I will try to put my thoughts ahead. So, disclaimer first, because say we are SEBI registered RANRIA. Whatever presentation material we have is all facts, data, and everything. हम स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो इट डज नॉट मीन कि वी आर एडवाइजिंग यू टू बाय और सेल और एनीथिंग. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आई एम अ वेरी बायस्ड गाय, सो मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ. सो प्लीज, आई थिंक दिस मटेरियल इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन माय माइंड और ओमकारा's mind. This is not an invitation to buy anything, so please, that is a big disclaimer. So I'll tell you the few things which I have learned in the last many years of my life. Of course, there have been a lot of mistakes also, but people don't make wealth buying stocks. People make wealth buying cycles. I think what differentiates Omkara from a lot of other people is that we want to catch the right cycle, and we want to ride that cycle so that we make tons and tons of money. Not only us, our investors as well. So there are various themes what we have picked up. Past में chemicals हुआ, steel हुआ, sugar हुआ, but one can debate कि वो structural है या cyclical है, and I know कि आजकल बहुत debate चल रहा है उसका, but you should know when to buy and when to exit also. But एक थीम है जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेरे दिल के बहुत पास में है. वो आज से नहीं है, वो कम से कम 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया हमें उस थीम पे बैठे हुए. We have been waiting for things to move on. This theme is not for 6 महीने या 3 महीने या all those things. I think अगर ये हम उसमें सही चले गए और उसके बहुत आसार है कि हाँ भी everything what we are seeing around us, that is there in front of us, we are looking at it, everything is there in front of us. तो ये थीम अगले 3 साल, 5 साल या even 10 साल भी चल सकती है. So the idea here is that if you catch that right theme, you have to catch those beautiful companies, beautiful leaders, जो आपका पैसा आराम से धीरे धीरे बहुत पैसा बना के जाएगी.
तो पैसा ज्यादा कमाना है कि जल्दी कमाना है, ये आपके हाथ में है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें पैसा ज्यादा कमाना है, जल्दी नहीं कमाना। सेकंड, हमें कोई गलतियां नहीं करनी है, गलतियां कम करेंगे तो पैसा बनेगा। So these are very, very important things when you invest in cycles. So, I will try and focus on everything else, but I just want to put through this also that Omkara Manufacturing Small Case, जब से हमने लॉन्च किया है, तब से अगर मार्केट 10% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 10% नीचे है, द स्मॉल case manufacturing, Omkara Manufacturing Small Case is up by 18%. So there's a 28% difference in terms of performance in the market. हमने भी मैजिक नहीं किया, as I said, हमने गलतियां कम की है. We try to minimize mistakes. We don't, बाकी मेरे ख्याल में आज तक कोई भी हमने रीबैलेंसिंग नहीं की है. I think that's the biggest thing what I can take from this small case. फालतू का कोई भी रीबैलेंसिंग नहीं की है. Anyways, jumping to the topic today. Now, there's a formal presentation which I have made, but I will try and put my thoughts first in next 2 or 3 minutes or 5 minutes. Then I will take through a formal presentation if that is needed. So, why this manufacturing? Why manufacturing? So, मैं बहुत बार, I am sure, और बहुत लोगों ने मुझे सुना है पहले भी, जब because this theme has been with us, with investors for a long time. तो ये this is the need for the government. The government of India can't remain without this. Now, in a very simple language, हमें पता है, मैं 10-12 साल से बजट ट्रैक करता हूँ. हमें हर साल पता है कि अपना जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो $7-8 बिलियन होता है. हर साल यही कहानी है, 5-6-7-8 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है. हम कभी 3-3.5-4% सेंट्रल प्लस स्टेट 8-9-10%, हम इन्हीं की बात करते रहते हैं. खर्चे कम होते नहीं है, इनकम बढ़ती नहीं है. दैट इज द सेम स्टोरी विद द गवर्नमेंट. आज से नहीं, मतलब 10-12 साल से ये कहानी है. नाउ द रीजन इज बिकॉज अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखो, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू टैक्सेस से आता है. मेजरली 90% टैक्सेस है. सो इट इज ईदर द डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, पर्सनल टैक्स हुआ या जीएसटी हुआ, उससे आता है. नाउ द इशू विद इंडिया हैज बीन ऑलवेज कि कोई टैक्सेस भरता ही नहीं है. सो आपका वो पर्सनल टैक्स हमेशा आज तक वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 3-4% रहा है. और कॉर्पोरेट टैक्स में कभी किसी ने इन्वेस्टमेंट की नहीं है लास्ट 10 साल में, बिकॉज लास्ट 7-8 years हैज बीन फुल ऑफ ऑल दोस थिंग्स, जीएसटी, रेरा, डिमॉन, ऑल दोस थिंग्स हैज बीन गोइंग ऑन. तो इन्वेस्टमेंट साइकिल का भी पिकअप हुआ ही नहीं है. हर साल हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट इसका टैक्स काट दे, रूट ज्यादा बना दे, ये क्यों नहीं करती गवर्नमेंट, वो क्यों नहीं करती गवर्नमेंट. हमें पैसा ज्यादा, हमें उम्मीदें ज्यादा है गवर्नमेंट से, बट गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा. So the thought of this manufacturing or making India the manufacturing hub आज से नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से. And these are my personal opinions. Okay, ये गवर्नमेंट के दिमाग में लास्ट 6-7 साल से चल रहा है. So come to think about it, अगर ये सारे के सारे जो steps हुए, like as I said कि अगर personal tax बढ़ाने हैं, तो गवर्नमेंट अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली कि टैक्सेस बढ़ाने से टैक्सेस नहीं आते हैं. तो आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 साल से कभी भी टैक्सेस नहीं बढ़े, बिकॉज गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि हम बेस बढ़ा दें. सो बेस बढ़ाने के लिए आधार क्यों आया, ये ऑल दीज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो हम बोलते रहते हैं इंग्लिश में, ये क्यों हुआ, बिकॉज उनको बेस बढ़ाना है. आधार ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया. यूपीआई क्यों हुआ, इफ यू सी द ट्रांजेक्शंस ऑफ यूपीआई व्हिच इज नाउ, इट इज अमेजिंग कि हाउ द नंबर्स व्हिच आर अचीव्ड इन इंडिया. सो ये सब चीजें इसलिए हुआ कि अगर आप टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते, अगर आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है, तो आप बेस बढ़ा दो. तो बेस बढ़ गया. अभी कॉर्पोरेट टैक्स जो जीएसटी, एक टाइम पे इतने टैक्सेस होते थे, वो जीएसटी बना दिए. अभी जीएसटी में 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए हम लोग. देयर वर सो मेनी हिंड्रेंसेस, वो कभी हुआ ही नहीं था. नाउ पर मंथ गवर्नमेंट इज हैविंग 1.5 लाख करोड़. हम डाइवेस्टमेंट की बात करें, डाइवेस्टमेंट इज वन ऑफ थिंग कि कभी होगा कभी नहीं होगा, वो बीपीसीएल का आज तक नहीं हुआ. सो द आइडिया इज दैट आप 90-95% पे फोकस करो. गवर्नमेंट नोस कि हाँ भी यू नीड फाइनेंशियलाइजेशन, inclusion of people into the financial metrics, and second they need manufacturing. तभी ये रेरा, जीएसटी, डिमॉन, all these acts, PLI schemes, कॉर्पोरेट रेट टैक्स 15% काटा. ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि भैया प्लीज हमारे पास पैसा नहीं है कि हम देश के बाहर बेच सके, पैसा हैज टू कम इनटू इंडिया. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जो बीज है, आई ऑलवेज से कि द सीड्स ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट नाउ, they are sown by the government since last 7-8 years, but unfortunately कभी कोई इशू आता था, कभी कोई इशू आता था, कभी कोई इशू आता था, कभी रेरा, डिमॉन, जीएसटी, all these political crisis, यूक्रेन, रशिया, कोविड एंड ऑल दोस थिंग्स केम इन. बट नाउ वी आर सीइंग कि वो इन्वेस्टमेंट पिकअप हो रहा है. आज आपने आरबीआई का सुना होगा, दैट्स द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द हाईएस्ट एवर, एंड नाउ इन्वेस्टमेंट्स आर मोर एंड मोर पिकिंग अप. सो वो जमीन पे हो रहा है.
Now, why this theme is so important? Why this theme is कि यार stock 30-40% बढ़ गया, चलो बेच के खत्म करो, कोई और ले लो? ऐसा नहीं होता है. It should not be done. See, India has been an agricultural economy for last how many years? 60-70 years. Okay, we have been stuck at 15% of GDP in terms of manufacturing since last many years. So कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में भी आए हैं. एग्रीकल्चर इकोनॉमी में अगर हम बंधे हुए हैं तो हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं. सो इफ हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सोच रहे हैं, तभी यू आर नाउ सीइंग गवर्नमेंट इज स्टेपिंग अप एंड सेइंग कि बस वो आत्मनिर्भर भारत वो 15% से 20% जीडीपी करने का है मैन्युफैक्चरिंग से जो आएगा. सो ये जो बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, दिस इज अ पिवट फॉर इंडिया, दैट द शिफ्ट मे हैपन, आई से मे हैपन कि 15% जो मैन्युफैक्चरिंग से आता था वो अगर 20% हो गया, इसका मतलब है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी 3 times, and this is not a small number my friends, 3 times going ahead. मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, प्लीज अंडरस्टैंड. मतलब जब केमिकल सेक्टर चला, जो हम सोच रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में यार लास्ट 5-6 साल में स्टॉक्स 10 गुना हो गए, 20 गुना हो गए, we were able to take only 0.5% away from China, only 0.5%. और उसके बाद भी imagine what happened to the stocks. Look, in a very simple language, if I may explain you, आज अगर जीडीपी हमारा ऑलमोस्ट, मतलब आई एम गिविंग यू वेरी रफ नंबर्स, 300 लाख करोड़ है. 300 लाख करोड़ में 15% के आसपास जीडीपी अपना मैन्युफैक्चरिंग है, 45 लाख करोड़. अगर मैं 500 लाख करोड़ सोचता है इकोनॉमी बन जाएगा और उसमें 20% जीडीपी का होगा, यू आर थिंकिंग कि हाँ दैट वुड बी 100 लाख करोड़. सो यू कैन ग्रो फ्रॉम 40-45 लाख करोड़ टू एज मच एज 100 लाख करोड़. दैट्स अ डिफरेंस ऑफ 50-60 लाख करोड़, 50-60 लाख करोड़. You put all the industrial, manufacturing, cap goods companies put together, I don't think तो किसी का भी सब मिला मिलू के sales 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगा. You can imagine the opportunity what this country may have going ahead if all those things are possible. And as I say, I'll show you the data कि ये सब कुछ जमीन पे हो रहा है. As I said कि this is the big shift, this is the biggest shift actually which is happening in India after 60 years. Think about it in textile sector. I'm just naming a sector. Okay, we were left behind in terms of textile sector because of Bangladesh, Vietnam, because the FTA was done. FTA gave a huge opportunity to Bangladesh. Bangladesh from nothing went to $35 billion. And we as a country which deploys the largest population in textile sector, we are stuck at $15 billion or $16 billion since last 10 years. Like one decade, we are stuck at $15-16 billion. Why do you think suddenly Piyush Goyal ji has woken up and said कि बहुत FTA करो, UAE के साथ FTA करो, ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA करो, EU के साथ करो, UK के साथ भी करेंगे FTA आगे जाके. अभी ये एकदम क्यों जाग गए सारे के सारे? You think about the body language of Jaishankar, of Piyush Goyal, Modi ji, or anyone in the government department. Everyone is moving carpets कि बस please manufacturing India में करो, आत्मनिर्भर होना चाहिए. So the mindset has completely changed. And then there are policies which are supporting all those things. So as I said, if you believe कि India $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्चुअली में 20% जा सकता है, जो हम मानते जा सकता है. As I said, I'll show you the data for that. If that is true, then you are not looking at something जो 1 या 2 क्वार्टर का ट्रेंड है. This trend could be there for the next 3, 5, 10 years. And the most beautiful thing of this sector is, see, last 7-8 years were very hard for entire India corporate. So हुआ क्या है कि किसी भी सेक्टर में आप उठा के देख लीजिए. अभी कैप गुड्स में क्या होता है, कैप गुड्स में एक सेक्टर है, उसके अंदर भी सब सेक्टर्स हैं सारे के सारे. तो सारे के सारे जो वीकर प्लेस थे सब चले गए हैं, बाहर चले गए हैं. बच कौन गया है? सिर्फ जो सबसे तकड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग है, वही बच गया. कैप गुड सेक्टर इज नॉट लाइक अ शुगर, सीमेंट, स्टील, रियल एस्टेट काइंड ऑफ अ सेक्टर जहां पे कैपेसिटी कभी भी लग जाएगी, कोई भी कैपेसिटी लगा लेगा. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो वहां पे देयर आर प्लेयर्स व्हिच आर देयर व्हिच कांट बी रिप्लेस्ड. गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ बेयरिंग सेक्टर. अभी बेयरिंग सेक्टर में लास्ट 60 साल 60 ईयर से ग्लोबली देयर आर 3 कंपनीज, एसके, पिंकन, शेफलर. दे कंट्रोल ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मार्केट इन इंडिया. कल को कोई अडानी, अंबानी या रिलायंस बोल नहीं सकता कि मैं कल को जाके एक बेयरिंग कंपनी बना देता हूं. इट इज इम्पॉसिबल. इट हैज नेवर हैपेंड. इट विल नेवर हैपन. So we as investors honestly don't know कि ग्रोथ कब आएगा और कितना बड़ा आएगा, ग्रोथ कितना आएगा. एक्सेल में कुछ भी डालने वाली बात है, बट किसी को मालूम नहीं है. I think the more important thing to look is not the demand side but the supply side. So in a lot of sectors you can see कि जब पैसा बनने लगता है सेक्टर में, everyone runs and says कि चलो मैं भी पैसा डाल देता हूँ.
लाइक एथनॉल में पैसा बन रहा है, रियल एस्टेट में पैसा बन रहा है, चलो मैं भी पैसा डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें तो कुछ आपको ज्यादा टेक्निकल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, नॉलेज उतना चाहिए नहीं है. बट बेयरिंग सेक्टर में, क्योंकि these are sectors which needs a huge technology mindset. They can't be just created. Like if Tesla is taking bearing from SKF globally, he can't say कि कल को चले यार कोई नया bearing वाला आता है मैं उससे bearing ले लेता हूँ. So it is not possible at all. So in these sectors, अगर abrasives है, abrasives में grindwell और QE, उसके अलावा तीसरा प्लेयर नहीं है. अगर बेयरिंग है उसमें 3 ही प्लेयर्स है, दे कुड बी 1 or 2 स्मॉलर वंस जो सबको नाम पता है, बट दे विल नेवर बी बिग एफिशिएंट लाइक दीज गाइस. सो वो 2-3 प्लेयर्स ही हैं. कंप्रेसर्स में 2-3 प्लेयर्स हैं, पंप्स में 2-3 प्लेयर्स हैं. सो इन ईच एंड एवरी सब सेगमेंट ऑफ अ कैप गुड्स यू विल ओनली हैव 2 or 3 प्लेयर्स हैविंग 90% ऑफ द मार्केट शेयर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसमें सप्लाई कभी आना नहीं है. So this is a big advantage. Why? Because when the demand comes, these guys have done huge gross block over the last 5 years, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज खूब सारा आने वाला है. Then you will be surprised कि बॉस इनका मार्जिन 30%, 35% कैसे आ गया, इनका ROC 40-50% कैसे आ गया. Because when the operating leverage will kick in, and then people will give value of P of 50 times, 100 times, कुछ भी देगा इसको. Like what happened with ABB Cements? Why ABB Cements are now trading with 100 times here? मतलब 1.5-2 साल पहले ABB was 30-40 times. Now market is very happy to give it 100 times ABB Cement. Why? Suddenly क्या हो गया उसमें? Because there is a big scarcity value in this sector that you can't replace these companies. You can't put up additional capacity. Only these guys who have capacity, they will only keep on growing. When the demand comes, the operating leverage will come. So I think, that if this cycle is so powerful, and which it might be, then you will see these companies reporting very solid numbers. And from the look of the quarter one gone by, hearing commentary from everyone, honestly, abhi to gaadi chalu hui hai. ठीक है ना, तो fasten your seat belts. So I have tried to give summary in my own words. As I said, I will try and rush into the presentation. Rakesh has told me 20-25 minutes. उसके बाद questions लूंगा आपके सबके लूंगा. So okay, leave this. Okay. So IT exports in India has surpassed the gross oil imports. मतलब किसी को मालूम है कि नहीं है, but IT exports are so largest. People don't think about it that India is the 3rd largest manufacturer of pharmacy in the world. India is poised to become the world's 3rd largest automobile industry by 2026. Medical devices में we may reach 50 billion by 25. So, as I said, manufacturing sector has a potential to be 2.8 times the current size by 2030. As I said, if you just see, we were stuck at 15% since last decade or more than decade. 15% से we go to 20%, which is possible, which is not impossible. We are looking at opportunity which could be 2.8 times. 2.8 times is a big number if you think about it. Now, there are many triggers for this. Okay, the industry consolidation is happening, economic health is improving, government initiatives are there, import substitution, PLA schemes, private dynamics, improving private dynamics, all are there. So if you just see now, as I said, कि एक sector में consolidation पूरा हो गया है. So think about any sector, you will always see 2-3 players commanding 90% or 85% or more than 80% market share. So that is the beauty of this space. You will always have 2 or 3 top leaders having this. Utilization, capacity utilization is now the highest ever what we have seen. So you see about capacity utilization data. June 2020 went to as low as 47%. Now it is back above 70%. Economic, I think this is very important because if you just see none of the capex investments into the economy can happen agar aapka financial system strong nahi hoga. So if you just see the net NPAs, if you just see the bad asset cycle, they all are reversal. So it will tell you the story about we used to be 4.5%, which is now down to less than 1%. Private sector mein ho raha hai. So you can see bad asset cycle in reversal, which is clearly seen in numbers of a lot of banks, private and public banks, which is going on there. So हमने जितना बुरा टाइम था, at least in the financial space देख लिया है. If you see the latest numbers coming in, 11-12% credit growth is visible. Now this is very important to understand. जब साइकिल चलता है तो क्या होता है कि 2004 से लेके 2008 से लेके 2012 तक you could remember JP Associates, GVK, GMR, Lanco Infra, everything. When people think कि यार बहुत सब पैसा मुझे इंफ्रा में पावर में लगा दूं, then सबने बहुत ज्यादा लेवरेज लिया. So those were the stories which were built during that time. And all those names जो bursted like 2004-2008 का साइकिल याद है मुझे जब रियल एस्टेट था. इफ यू रिमेंबर यूनिटेक का मार्केट कैप 10 करोड़ से 100 करोड़ से 1 लाख करोड़ पहुंच गया था.
So everyone thought कि मैं real estate में घुस जाता हूँ. So the period between 8 to 12 or 13 saw massive leverage happening in the system. But in the last 7 years, 2013 to 2020, 21, we have seen full deleveraging happening in. So the cycle works beautifully. You take leverage and then deleverage. And deleveraging takes a lot of time. Now, when the cleanup has happened, you are again seeing reversal of leverage happening in the system. And this time, the players who are taking leverage are more strong with stronger balance sheets, clean up everything, less number of players in the sector, and it is a healthier capital formation which is happening. So leverage, deleverage, and then again re-leverage, which is happening in. As I said, one of the beautiful charts which I keep on seeing is that there's a decadal breakout in terms of the exports which is happening in. Now we are nearly $450 billion in terms of exports, which has never happened in the last 10 years. So this is the first time we are crossing that. As I said, the gross fixed capital formation is happening. The CFO to capex is at 2-decade high for a lot of private sector companies, which is happening. Now there is a big myth which goes around. Now I want to put this point into perspective. A lot of people tell me यार कि अगर interest rate ऊपर है, inflation ऊपर है, तो यार ये sector चलने वाला नहीं है. Let me remind you, the biggest cycle what we saw in the cap goods was between 2003 to 2008. Look at during that period of 2003 and 8. I think that the Indian GSEC yield was at the highest point. Jan 2008, it was at the highest point. Even the inflation rate was at the highest point. Now the beautiful thing to understand is कि जब interest rates ऊपर जाता है, but when the interest rates are low, the ROCs are also low for a lot of companies. But when interest rates go higher, your ROCs have to move higher so that you get money, you get capital. The capital becomes scarce. There are only few players who are efficient enough, who remains in the system in an upswinging interest rate cycle. They can possibly do higher ROCs. So the inefficient player always in this rising interest rate environment will move out of the system, and it will give space to the guys who are more efficient. And that is what we are seeing in results also. Only the efficient players are able to maintain their margins, maintain their ROCs, but the inefficient ones are not able to control it. So I am not, the biggest cycle in the cap goods happened when interest rates and inflation were the highest ever between 2003 to 2008, because efficient players will keep on commanding, keep on operating, having operating leverage, and you have to focus on one thing, कि कौन से आदमी ने सबसे बड़ा growth block बनाया हुआ है. As I said, this is the myth which is happening in the government initiatives. I can talk about it, how the government has been doing it. If you just see the public capex as a percentage of GDP, it is increasing. The total number of projects went up from 184 to 287. It's not only the government capex, but the changing mix is also which is changing in. If you look at the budget allocation, defense was never a sector on anyone's radar. But what happened in the last 1.5 years, suddenly HAL, BDL, BL, everyone is talking about. So that is where the government is focusing on roads, infra, defense. These are the budget allocations, which the government has been doing. Again, I can talk on this slide, pata nahi kitni baar, but all the reforms which the government has ushered in the last 2 years, 3 years, PLI schemes, the repeal of retrospective taxes, labor reforms, defense, land reforms, single window clearance, taxes and everything, it has all told us the government is very, very serious about this. And you just see the proportion of manufacturing sector in the new investment announcements, which is rising again and again, which has never happened in the last 10 years. You see the PLI incentives, which has gone to as high as the per year manufacturing output incremental could be 7 lakh crore. The PLI impact as per Credit Suisse can be 1.5% by 2017. So that is the reason when you think about Dixon, Ember and all, you can see how electronic production in India, all those things, the mobile phones manufacturing in India is now 8 times. Indian electronic exports have grown 17% CAGR. So all those things are happening. Okay, you look at the defense capital expenditure, you look at the defense exports number, it is 6 times the defense capital expenditure, which was nothing, it has grown. So you are seeing all those initiatives are taking in place. So the ground पे चीजें बनती है, तब सेक्टर चलता है, जब सेक्टर चलता है तो स्टॉक्स चलते हैं. So these things are happening, these things are moving in. So if you just see the announcement of और हुआ क्या है, अगर ये सब कुछ हुआ है तो प्राइवेट सेक्टर को भी हौसला हो गया, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करने लगे. जो 10 साल से बैठे थे कुछ नहीं करेंगे, now they are announcing कि हाँ we will be doing more and more capex. So if you just see the capex announcement, I think 8 lakh crore of announcement of capex has been done by a lot of companies between next 2 years. So these are the capex which will be coming in 8 lakh crore in the next 2 years. So sorry. So private sector is making inroads, आप जो बोल रहे हैं. So वहाँ पे अलग-अलग जगह पे they are putting in capex.
every single sector, chemicals, metals, electricity, transport, construction, they are putting capacity. So you see the rising number of companies in terms of registrations are moving in, and look at the chart of this manufacturing. So this is the data, the sector-wise share in registration of new companies. Manufacturing used to be 11.9%, 11.9%. Suddenly it is 21%. Statewide capex is improving, center-wide capex is improving, environmental clearances are going up. There's a revival which is happening at the core data. You saw the PMI data which came in, it was at 56, which is never seen. मेरे ख्याल में highest ever bullish commentary from good companies, domestic companies. You look at the numbers, order book of मेरे ख्याल में Thermex हुआ, SKF हुआ, और Siemens हुआ. It has been the highest ever. I think last 7 साल में पहली बार मैंने देखा कि ABB, Cummins, Siemens सबका ROC 25% ऊपर चला गया. A lot of people think it is only India story, but if you track the numbers of these Indian MNC companies in India, now they are exporting also, where the growth is over 50%. Last year, I'm told, where Maruti, they exported the highest ever, for them. Schaeffler, the numbers, if you see, Schaeffler is doing highest ever export in terms of, what they have been doing from India. I think it was over 50% growth, which happened for Schaeffler. ABB India order book has grown up 80% in India. I mean, these are unbelievable numbers which are coming in. Now, please let me tell you why I think that if the cycle is correct, why will you make a lot of money? So as I said, this is not कि ये आज से चालू हुआ. This has already started from last many years. But the seeds, जो data आना चालू हुआ, वो 2021 से आना चालू हुआ in terms of the output. But the effort has been since the last many years. What happened between the last cycle, 2003 से 2008 में क्या हुआ था? You look at this. If it's this is the total of all the cap good companies. Between that period, the revenue for all the cap good companies went up by 3.5 times. 3.5 times. Profit went up by 6 times. EBITDA went up by 4.5 times. I'm talking about the entire market, all the companies of the cap goods. The OCF went up by 2.3 times. Asset turnover increased. Now see the beauty of this, the gross block formation. So we were sitting silent. जैसे मैंने बोला कि जब leveraging हुआ और deleveraging हुआ. Last 6-7 साल में only few of the companies were there in the system, and they have increased the gross block from almost 50,000 crores to 91,000 crores. So you have seen gross block creation of nearly 40,000 crores in the cap good space, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था. The beauty is what happened to debt equity. Debt equity which went to 0.5, it is now at 0.2. ROCs went to as low as 14%. Now it is reviving to nearly 20%. So you are seeing that the operating leverage is taking place in these companies. And of course, still, cap goods remains an under-owned sector. Look at the ownership of these. 12% FIs का होता था, अभी 9% है. Cap goods का market cap, it used to be 6.5%. That time, it is now only 2.5%. So it is nothing. Now, let me give you some case studies. Siemens, if you remember, अभी क्या होता है कि we only remember the things जो TV पे रोज चलती है. But 2003-2008 में क्या हुआ था? Siemens का market sales went up by 7 times from 2003 to 2010-11. EBITDA 5 times, profit 5.5 times. Siemens का market cap went up by 16 times, 16 times in those 5-6 years. SKF 19 times उसका market cap बढ़ा था. Of course, sales, EBITDA, PAT, there was a growth of 5-6 times. But the PE expanded. The PE expansion happened, and that is why market cap went up by 19 times. Thermex market cap went up by 17 times in those 5-6 years. ABB India 5 times. AI Engineering 35 times market cap बढ़ा था उसको उस समय. So there are various ways to play this cycle. Various ways to play this cycle. I have just pointed out a lot of companies in this. But the idea here is that you don't catch any company. You don't catch any company कि चलिए ठीक है कि ये company cap good cycle में मैं तो ले लूँ. There has to be some unique positioning of that company in terms of the capabilities. Technology is very important in manufacturing. Supply chain is very important. Customer relationship is very important. These guys, they don't come to you कि एक quarter में आ जाएंगे, 2 quarter में आ जाएंगे. The engagement itself takes 5 years. Then if they get engaged with you, then the cycle with them could last for 10 years. They will never leave you and go away. So if you think about it, there are companies which are operational in India for the last 20-30 years, and they will remain the way they are. They will never go out. So you have to invest in leaders which have track record of execution and very strong balance sheets. You may think कि यार इसका PE ज़्यादा लग रहा है, but PE मत देखो. PE देखोगे तो कभी पैसा डाल नहीं सकोगे. Because when ROC expansion comes, suddenly you will see कि the PE बहुत सस्ता होगा अगले साल.
So आज वो 40 का P दिखेगा, but next year you think यार ये तो 25 की P पे आ गया, because the execution is happening so rapidly. You will see suddenly in one quarter they will grow at 50%. But I can tell you ABB, when we used to track COVID time के आसपास, market का 20,000 करोड़ होता था, profit 400 करोड़ के आसपास का expectation था. अभी same ABB का expectation है कि profit करेगा 500-550 करोड़, but उसका market cap 60,000 करोड़ हो गया. So what has changed? If you look at the P expansion in these companies, so inflation रहेगा, commodity inflation रहेगा, interest rates ऊपर जाएंगे. But as I said, in a rising interest rate, rising inflation environment, the most capable, the companies which will execute the best will only sustain and take away market share from inexperienced companies. So you will keep on seeing this cycle playing out, and then it is sad to say that a lot of people miss these beautiful companies because उनको सिर्फ वो P या छोटे-छोटे stocks में जाना होता है. So our focus has been cap goods, engineers, industrials, auto ancillaries, defense, paper. These are the companies. So that is it from my side, Rakesh bhai. And if there are any questions from your side, I will take them away. But the last point I want to just make is कि यार कि अगर आप लोगों ने सच्ची में see, you have to believe, you don't have to trust me कि यार actually में manufacturing में इंडिया इतना बड़ा बन सकता है. So you talk to your friends, relatives who are into the manufacturing sector, or if these things become, if we are 2.5 times, 3 times of what we are in terms of manufacturing, then you will see a lot of companies growing much and much bigger than what they are. Think about it. आज SRF है, आज नवीन क्लोरीन है. You can't take away from them because they have created a very, very efficient place in there. They are monopoly. उनको कोई तोड़ नहीं सकता. So I remember 2012-13 में जब हम chemicals बोलते थे तो लोग बोलते थे नहीं यार ये 2 साल का साइकिल है, 1 साल का साइकिल है, खुश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. But these are the companies which used to do 100 crore का 200 crore का capex. Now SRF is doing 3,000 crore capex every single year, and no one is questioning them because they see कि how much growth is coming in. If you look at the capex which some of the companies have done in the industrial cap goods space, you'll be amazed कि हमें उनका gross block जो 15 साल में उतना नहीं था, last 5 साल में उससे ज़्यादा हो गया है. So they understand that there's a huge cycle which is coming in. So you have to just, you don't have to do any silly mistake of just catching any company कि चलो यार सस्ता कंपनी ले लेते हैं, छोटा कंपनी ले लेते हैं. I know a lot of people जब हम बेयरिंग की बात करते हैं तो 3-4 नीचे वाले नाम लेके आते हैं. But think about it कि अगर यार आप टेस्ला हो तो टेस्ला ये नहीं बोलेगा कि मैं वो छोटे वाले के पास जाता हूँ जिसके पास कैपेसिटी नहीं है. सो अगर आपको साइकिल का फायदा लेना है तो आपको कैपेसिटी चाहिए, आपको ग्रॉस फ्लो चाहिए, आपको एसेट टर्न करना है तो एफिशिएंसी से एसेट टर्न अप करोगे, उस पे मार्जिन्स कमाओगे, तभी पैसा बनेगा. वर्किंग कैपिटल कम होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कम होगा तभी वो कैश फ्लो बनेगा, तो तभी वो कैश फ्लो बिजनेस में घूमेगा, तभी और पैसा बनेगा. सो if you leave this space, trust me, it's a big thing what you could be missing in India because this is not like कि यार साइकिल आया और गया. So अभी भी ऑटो का साइकिल है, अभी भी ऑटो चल रहा है, which was something which opened out 20 years ago. IT is still there, chemicals is still there, but this manufacturing as a gambit could play out very, very big time. And at the risk of sounding repetitive, ये कुछ कंपनीज है जो दोबारा बन ही नहीं सकती है. तो सप्लाई साइड पे कोई भी नया नहीं आएगा. These are the only places which will remain in. So take advantage of this operating leverage, which will massively play out going ahead. Don't think of investing at one go कि सारा का सारा एक बार लगा दो, but keep some of your money as a basket in the manufacturing sector with diversified sector. So it is not only industrials, but defense, cap goods, autos, paper. These are different sectors which are there, and there are beautiful companies. Rakesh bhai. Yes, sir. Thank you very much. I think काफी summarize करके आपने last slide तो capture कर लिया है. So I will request everybody to put on their questions on their chat. And in the meantime, काफी questions हमें आए, chat पे भी थोड़े बहुत आए, और बाकी हमने एक form float किया था तो उसके तहत भी हमें काफी questions मिले. So I will just share some questions with you, Varinder bhai. In the meantime, while people are putting more questions, we can start with the questions what we have received so far. So the first question is one of your fan, Mr. Vimil Kumar Dhar. He has a question to ask, and I think this is something which every investor will relate to it, and which you have covered. But still, sir, I need to invest in your manufacturing small case, but my issue is most of the recommended shares have already run. Is it sensible to put a certain amount, what you have mentioned, around 30 lakhs in manufacturing small case at present levels?
though you have already stressed that it's not a 1-2 quarter or a 1-2 year game, it's a multi cycle, but still, please, good to have your perspective. Okay, I understood. Bimal, right? Yeah, Vimal Dhar. तो विमल भाई, मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो मैंने लेसन सीखा है लाइफ में, कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्ट्रेंथ, नेवर इन्वेस्ट इन वीकनेस. सो मेरे पास बहुत इन्वेस्टर्स हैं, बहुत इन्वेस्टर्स हमेशा बोलते हैं अरे यार स्टॉक कितना गिर गया, वो 52 की लो पे आ गया, तो मैं उसको ले लेता हूँ. कितने बार लोगों का कि वो पंगा ले लेके फालतू में और पैसा जाता है उनका. दे ऑलवेज थिंक कि यार ये तो 40% गिर गया है, अभी और कितना गिरेगा, अच्छा 50% गिर गया तो लेना ही है मुझे. 52 वीक लो वाले स्टॉक देखते हैं. You don't have to get into that mindset. क्योंकि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, there is a perennial reason for it कि स्टॉक ऊपर जा रहा है. And who are you and me to decide कि यार वो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा? As I said, my focus is on the earnings. Can this company grow over 20% for the next 5 years or not? That is more important for me to understand. Please hear call calls of some of these companies, what we own. Most of the companies understand कि बॉस अभी तो मैं 15-16% मार्जिन पे हूँ, मैं 20% के ऊपर मार्जिन पे जाऊंगी और 20% ग्रोथ आएगा मुझे टॉप लाइन में. If that remains, as I said, in this cycle, you will see PE expansion happening across companies. We used to take a company Rolex, 1100 पे उसको कोई देखता भी नहीं था, आज उसको 1800 कर दिया आराम से और उसका PE एक्सपेंड हो गया. हुआ क्या? Those people realize कि बॉस वो कंपनी आगे जाके कम से कम 200 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है. वो 200 करोड़ उसने आज कर दिया रन रेट से, आगे जाके 300 करोड़ का प्रॉफिट करेगा, अगर हो गया तो 15 टाइम पे हो गया. सो क्या वो 50 टाइम पे ट्रेड नहीं कर सकता? लेट द कंपनी टू 40% ROC, then you will think अरे ये कहां से आ गया. You don't have to invest in weak, वो सस्ते के चक्कर में मर मत जाना. सबसे बड़ा गलती होता है वो सस्ता देख के. You have to invest कि उनमें यूनिक पॉइंट क्या है कंपनी में, यार मैं इस कंपनी को क्यों ले रहा हूँ इसको. So if that is there, I don't see यार, मुझे लगता है कि most of these companies they will keep on growing, ROCs will be higher, PE expansion will happen. As I said, अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, सेक्टर में नहीं हुआ. अगर मैन्युफैक्चरिंग 100 लाख करोड़ हो जाता है, 100 लाख करोड़ हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटी 50 लाख करोड़ कम से कम है. 50 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी किसको बोलते हैं बॉस यार. राइट. आई थिंक वरिंदर भाई, एक आपके फैन ने रिक्वेस्ट की है, वरिंदर भाई को हमको 70 mm स्क्रीन पे देखना है, तो इफ यू कैन जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन फॉर अ मोमेंट, सो आपका पूरा उनको एक इन पर्सन वाली फीलिंग आ जाएगी. थैंक यू फॉर दिस. Okay, so another question is coming from Anup Kalani. So Anup wants to be in this journey of investing in manufacturing companies, but I think he wants to take one more step ahead and he wants to be an informed investor. So he's seeking some guidance, Varinder bhai, that how one should remove the bad apples in the manufacturing sectors, any financial numbers, ratios to look out, and what are your top 3 sectors where he can start his study with. यार ऑनेस्टली ये कोई 5 मिनट में समझाने वाला चीज नहीं है, बट सी आई ऑलवेज से वन थिंग यार कि देखो, यू आर प्लेइंग साइज, यू आर नॉट प्लेइंग PE. व्हेन यू आर प्लेइंग साइज यू हैव टू विद साइजेबल कंपनीज. एक जब साइकिल आता है तो साइकिल में गुड़ा गधा सब भागता है, तो होगा कि हाँ भी वो छोटा कंपनी सब भागेगा, बट द आइडिया इज कि वो पेपर में भागेगा, जब वो नीचे गिरने लगेगा तो माल भी बिकेगा नहीं. So you have to see कि यार उनमें execution capabilities कितनी है. What I do is I go last 20 years, I check कि अच्छे साइकिल में उन्होंने कैसे किया था, पर more importantly बुरे साइकिल में कैसे किया था. बुरे साइकिल में उन्होंने बैलेंस शीट मेंटेन करके रखा था, खराब रखा था, फालतू एक्सपेंशन किया था, मार्जिन्स की ठुक गई थी. You have to understand उन्होंने बैलेंस शीट कैसे रखा था. So please understand, कंपनीज लाइक सुंदरम फास्टनर्स हुआ, कंपनीज लाइक एस्केप हुआ, शेफलर हुआ, so many companies यार, look at the balance sheet, crystal clear, जिंदगी में डेट नहीं लिया, they get their money back in 30-40 days. उनके पास अगले 2-2 साल का ऑर्डर बुक है. सो अगर मैं सोचूं कि नहीं यार मुझे वो 10 का पी वाला स्टॉक लेने का है और इतना 30-40 पी का लेने का नहीं है, इट्स लाइक थिंकिंग अबाउट नॉट बाइंग इन नरीमन पॉइंट बट बाइंग इन बेंदर और समवेयर एल्स. ठीक है, दैट इज पॉसिबल, बट देन यू गेट द सेम वैल्यू फॉर द कॉस्ट व्हाट यू गिव. सो a lot of money gets stuck into this irrational way just because कि वो मार्केट में फैंसी होती है, टीवी में फैंसी होती है, बट जो एग्जीक्यूशन है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो. और मैं जो चेक करता हूँ, आई गो बैक चेक कि सबसे बुरे टाइम में उन्होंने कैसे किया.
If they have able to maintain their balance sheet in the worst time, in the worst cycle, I will bet on that promoter, because at the end of the day, you're betting on the promoter. Sure. Varinder bhai, I think there are two questions from different people, but on the same topic. So Prashant and Pradeep Yadavji is asking a view on sugar sector, and Pradeep specifically asking, is it a good time to average sugar stocks? Yeah, because honestly, we own sugar sector. We are still owning it. We don't want to add right now. We are waiting for at least some more time. We have cautioned our मेरे ख्याल में investors earlier also कि अभी जल्दी लेने का नहीं है. एक महीने से हम लोग शांत बैठे हैं आराम से शुगर में. जब टाइम आएगा तो हम लेंगे. Because this sector is not dead, but we are not in a rush to add into it. Sure. I think you have already touched upon this point, Varinder bhai, about the PE. So Pappu Guru has a question: how you compare the PE in the last cycle? And he needs to understand from your side that he understands that PE was very low in capital goods in 2003, but it is already high now. So how you relate to that aspect of? Very very good question. Okay, because उस टाइम पे यार ये सारे के सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये 10-10 पी से नीचे मिलते थे. Right. अभी आप बोलोगे 40-50 का पी हो गया. बट अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा नहीं था तब यार. 2003-2008 में अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा कहाँ था. आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी हो सकता है. एंड आई सेड कि उस टाइम पे तो आसमान खुला था, बहुत लोग थे वहां पे. अभी कौन है? आज मुझे दिखा दो कि बेयरिंग सेक्टर में 3 कंपनी से अलावा कोई और कंपनी है. थिंक अबाउट इट. 15 साल पहले या 10 साल पहले टेक्सटाइल में 15 सॉरी टेलीकॉम में 15 कंपनी होती थी. आज 3 ही कंपनी है. So, जो 15-20 साल का है वो पी था, because market was unexplored and the size of opportunity was very very less. Right now, scarcity will always get huge premium, and you want to be part of it, you don't want to be part of it. A lot of people have missed Bajaj Finance because just वो price to book देखते रहे. Because a lot of people have missed Asian Paints, Pidilite क्योंकि वो price to book देखते रहे, price to earning देखते रहे. But at some point of time, if you think that there is a huge cycle which is there, you have to step into these companies, think about it कि बॉस मुझे 20% ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको एक स्टोरी, मैं ऑनेस्ट कन्फेशन करता हूँ, ठीक है ना. हम लोग कंपनी लेते थे जुबरेल पावन राकेश भाई, ठीक है. तो जब लेते थे ना वो 10 का पी होता था. मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब पी पे बहुत ज्यादा बात करते हैं हम लोग. 10 का पी होता था, 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता था. हमें लगता था वाह यार इतना बढ़िया कंपनी, इतना अच्छा कंपनी, 10 का पी पे कैसे मिलता है, इतना सस्ता कैसे होता है. बॉस आज भी उसका 10 का पी है और वो 1000 करोड़ का प्रॉफिट 300 करोड़ का हो गया. 1000 करोड़ का 300 करोड़ का हो गया, आज भी 10 का पी है. और दैट स्टॉक इज डाउन बाय 60-70%. थैंकफुली वी एग्जिटेड वेरी वेरी अर्ली. बट क्या करूंगा मैं 10 का पी लेके यार, जब उसका प्रॉफिट ही कुछ कमाएगा नहीं. देयर आर कंपनीज जो 100 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, बट उनका पी 20 का 50 हो गया. लाइक सारेगामा 7-8 की पी पे लेते थे तो मिलता नहीं था उसको. बट उसमें भी एक यूनिक पोजीशन थी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में वही अकेला जो सबसे बड़ा है, 2 ही कंपनीज थी, वो और टिप्स. उसको 7-8 का पी मिलता था. उसका प्रॉफिट अगर 10 गुना बढ़ा था, उसका पी रेटिंग कम से कम 50 गुना हो गया. अभी वो 50 पी पे चल रहा है. The idea is because people understand that now it is a sustainable model in terms of growth which is coming in. So people think कि सिर्फ पी से स्टॉक चलते हैं. नहीं बॉस, प्रमोटर और प्रोडक्ट में क्या वो एफिशिएंसी है कि नहीं है. अगर हम सोचे कि नहीं है देन तो ठीक है, कुछ भी कर लो. बट आपको लगता है कि बॉस यार ये कंपनी दोबारा नहीं बन सकती, ये प्रमोटर को एग्जीक्यूट करना आता है. Because look at the board of directors of some of these companies, you'll be amazed कि हाँ भैया, these are the guys who are actually running the company जहाँ पे आपका hard earned पैसा लगा होता है. So please, I want to make this point clear कि we are not adventurous investors. As I said कि हम गलतियां कम करना चाहते हैं. हम गलतियां कम करेंगे, हमारा पैसा अपना बन जाएगा. I don't want to play this market, but I want to be in this market ताकि मैं आउट ना हूँ. The only way to make money in this market is कि आउट में होना पड़ेगा. So P देखोगे तो P देखते रह जाओगे बस. नहीं, fair, Varinder bhai. So couple of more questions. So just wanted to check the time. So we will be taking questions for another 10 to 15 minutes. Is that okay, Varinder bhai? हाँ भाई, please. Perfect. So great. So now we have a question from Amrit. What is your view on real estate sector? I know it's not in the manufacturing, but I think there is a lot of ancillary
stuff which you mentioned in your presentation. The problem with the real estate sector is na, Rakesh bhai, usme ROC banta nahi hai. Right. So, because it's a very capital intensive sector. Okay, the sector has improved a lot after RERA and all, but ROC nahi banta. So a lot of investors stay away from it. Sure. Phoenix is one of the greatest companies we have in terms of the mall management in India, but uska ROC देखो कभी 5-6% से कभी ऊपर गया नहीं है. Right. See, मैं again बोल रहा हूँ, the game in this market is not to buy a stock. The game in this market is to buy a cycle, and to buy a cycle जहाँ पे PE expansion हो. Real estate में PE expansion होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, but as I said, it is in front of your eyes that there are companies, if they go on performing to 40% ROCs, उनका PE industrials में, cap goods में 100 का PB होता है. ABB Siemens आपकी आंखों के सामने है. Sure. There are companies still available at maybe 20 PE, if I have to use the language of PE and all, and they will grow at 20% and they will report ROCs of 30-40%. Right. So coming back to your small case composition, Varinder bhai, so this is a bit technical, but if you can just elaborate on this, that on what basis do you decide the allocation? I believe most of the times it's equal weighted, but I'm sure you will have your own logic for a particular allocation to a particular stock. So if you can share that. So we are very careful in terms of adding any stock into a portfolio. So we don't randomly just add कि चलो यार आज बैठे हैं तो ऐड कर लेते हैं. ये स्टॉक चल रहा है तो उसको कर देते हैं, फिर एक हफ्ते बाद बोलेंगे इसको निकाल देते हैं, रीबैलेंस कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा. मगर वी इन्वेस्ट अवर ओन मनी, वी आर वेरी केयरफुल. अवर आइडिया इज कि मैं कोई भी स्टॉक वैसा नहीं बताऊंगा जो मैं आपको बता सकता हूं और अपने मम्मी पापा को बता नहीं सकता हूं. सो वी विल नॉट टेक मोर देन 20 स्टॉक्स इन मैन्युफैक्चरिंग, एज सिंपल एज इट इज. हैव इक्वल वेटेज. वी वांट टू प्ले द साइकिल. मगर आज भी हम लोग वो इंडस्ट्रियल, कैप गुड्स, ऑटो एंसिलरीज, डिफेंस, sugar, paper पे बैठे हैं, और it takes care of it. We have an equal weightage. Sure. But we are very selective in terms of adding names into it. So Varinder bhai, I hear you about the kind of opportunity which is thrown at India, and especially in the last 2-3 years, the kind of macros which has gone in the favor of India as a destination. But there are still some challenges which one of our investor has highlighted, and he just wants to address those concerns, that how this corporates, especially the manufacturing companies who are doing so large capexes and all that. So the low-hanging fruits definitely they have captured, but how does we as a country increase our skills, labor skills specifically, and productivity to attract more complex manufacturing? So do you see some green shoots in that direction as well, wherein these companies or these sectors are taking efforts in that direction? Again, very important question, but मैं वही बोलूँगा कि सर को जिन्होंने पूछा मुझसे कि आप थोड़ा सा कभी SKF हुआ, कार्बोरेंडम हुआ, सुंदरम फास्टनर्स हुआ, इनका plants देखेंगे, तो these are companies which have applied now robots also. Wow. So they are doing entire manufacturing by robots. So these manufacturing companies going ahead in the next 5-10 years, they will not be only manufacturing companies, they will be technology companies. If you look at global ABB, Siemens and all, they are now buying all the technology companies only. So you are right that the way complex systems will be there in terms of how manufacturing will be done, it will not be easy for everyone. So sure. That is why I again stress on this point कि इसमें नया capacity आ ही नहीं सकता. Like आज Rolex जो है, he is the only guy who is supplying to SKF, Timken, Schaeffler. It is not easy. It is not easy कि यार कि एक राजकोट में बैठा कंपनी इन तीनों कंपनीज को देता है. They are the one who supplies the entire raw material. They are the one who actually bear all the expenses, freight expenses and everything. उनके साथ टाई अप करने को ही 5-6 साल लग जाते हैं. Right. So वो कैपेबिलिटी बनाना किसी का मतलब नहीं है. So yes, manufacturing is not simple. It is a very complex, mechanism, and only few companies will get more efficient into it. That is where the efficiency has to play a role in this. Sure. You briefly touched upon, Varinder bhai, about the PLI, I think, which is one of the most important catalysts, right, in the manufacturing as a theme. So PLI definitely seems to be the way forward for India. What all factors you foresee can impact the intensity of PLI and Make in India initiatives, or derail, whatever? Any concerns or any risk factors there? Because recently we have heard somewhere that there have been some delay in implementation of policies at local level,
and a lot of companies or some companies not getting their incentives under PLI. I'm sure at a scale where we operate. I don't think so, Rakesh bhai, ये सब चीजें हैं, but to be honest, it's very company specific यार. Right. हम कंपनी पे पैसा लगाते हैं और हमें पता है कि जो कंपनी से एफिशिएंट है वो कंपनी काम कर रही है, कैपेक्स लगा रही है. See, I will only request all of you कि आप एक बार जाके ना सिर्फ ग्रॉस फ्लो चेक कर लेना कुछ कंपनीज का. आपको पता चलेगा वो 5 साल से पैसा लगा रहा है, आज से पैसा नहीं लगा रहा है, और उन्होंने कभी भी कोई भी बैंक से डेट नहीं लिया और वो खुद का पैसा कैश फ्लो से धंधे में डाल रहा है. तो मेरी बात मत मानो, कभी भी मत सुनो, बट अगर ग्रॉस फ्लो कोई कंपनी का बढ़ रहा है, सी वाई केमिकल सेक्टर यार, मतलब चलो मैं एक और एक्सरसाइज देता हूँ आपको. गो बैक लास्ट 20 years डेटा आपको स्क्रीन से मिल जाएगा. 20 साल का ग्रॉस फ्लो देख लेना, अतुल का, SRF का, दीपक नाइट्रेट का देख लेना. 15 साल तक कुछ नहीं किया था बॉस, ठीक है ना. वो 2012-13 में सब जा गए. 2012-13 से लेकर 2018-19 तक उनका जो कैपेक्स था कम से कम, इट वाज हायर द लास्ट 15 years put together. Look at DVs, ठीक है. Same thing is happening with the entire capex cycle. So it is not dependent on only PLI. PLI is like a cherry in the cake. ठीक है जी, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, which is a great thing. Corporate tax कर दिया, which is a great thing. But these guys understand कि the scalability which will come. बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे 10 लोग होते थे काम करने वाले, आज 3 लोग रह गए हैं और उनको धंधा करना आता है. उन्होंने धंधे में पैसा डाला. बाकी लुक एट क्राफ्टमैन, 1200-1300 करोड़ का जो ग्रॉस फ्लो होता था, 3000 करोड़ ग्रॉस फ्लो है यार. क्योंकि 1500 करोड़ किसने धंधे में डाला है, फालतू में नहीं डाला. 1500 करोड़ इन्वेस्ट किया. एंड यू कैन सी डिटो विद एनी कंपनी, एसकेएफ हुआ, कोई भी टिम्पन हुआ, शेफलर हुआ. सो 15 साल तक दे वर सिटिंग साइलेंट, बट 5-6 साल में दे आर पुटिंग मनी. इट डिडंट हैपन बिकॉज़ पीएलए तो अभी आया है. बट एज आई सेड, व्हेन यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, देन देयर आर थिंग्स जो धीरे धीरे होता रहता है. सो इनका साइकिल चल चुका है अभी. सो कुछ भी हेल्प करेगा गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को पता है बॉस, यूरोप गैस के कारण मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकता. जापान में सब बुढ़े हो रहे हैं, ठीक है, वो गया. बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स. कौन सा देश बचा बॉस? वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग 2% चाइना से ले लेंगे, 2 का 5% हो गया. इमेजिन द अपॉर्चुनिटी व्हिच विल बी देयर. टुडे एवरी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड इज थिंकिंग बॉस मुझे लॉन्ग टर्म पार्टनर कौन सा चाहिए. एज अ कंट्री, सी यू हैव टू बिलीव कि ये कंट्री कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. आपको लगता है बस कंट्री नहीं कर पाएगी, तो स्टोरी ओवर है यार. राइट. कई बार क्या होता है, अपनी आंखों के सामने दिखता है बट हम देखना नहीं चाहते, और ये आंखों के सामने दिख रहा है कि ये सब चीजें हो रही है, बट स्टिल पीपल विल थिंक आइडिया में लेता हूँ, यस बैंक में लेता हूँ, नॉर्थ वाला स्टॉक लेता हूँ, 10 वाला स्टॉक लेता हूँ. वो आपकी मर्जी है. बट देन इफ यू हैव टू बिहेव दैट वे कि वो 9-10 वाला स्टॉक लेके पैसा कमाने का, तो उसी पे अटके रहोगे सारी उम्र. I think वो एक कहावत है ना, दिया तले अंधेरा. When you are too close to the subject, then you really don't appreciate those things. Look around you, but it is in front of us. बॉस, हम लोग आज बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स का 15% काटा था. वो बेवकूफ है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट 15% टैक्स कहाँ पे काटा, बताओ मुझे यार. क्योंकि कितना 2-2.5 साल हो गया उसको काटे को, 3 साल होने को हुआ. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग सिंस लास्ट 5-6 years. आधार हुआ, जीएसटी हुआ, डिमांड हुआ, ये हवा में नहीं आया यार. उनको पता है कि अगर मुझे इनकम बढ़ानी है तो इनकम बढ़ाने का यही तरीका है, अदरवाइज देयर इज नो वे दैट गवर्नमेंट कैन अर्न मनी. और फिर देन यू से कि बॉस कभी टैक्स भी काटो, टैक्स भी काटना, रेट टैक्स काटो, फिर रोड्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते. अरे पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास यार. बिल्कुल. So I think Varinder bhai, we have a scheduled time of this YouTube live till 8 o'clock. So I will take 1 or 2 more questions and maybe we will wrap up. And just to create some interest for everybody, there is definitely yes, that is what I was just reminding. नहीं, मैं ये small case वालों ने हमें भी बोला कि भैया whatever is it, so you know we also want that a lot of people participate in this India story. Not बाकी आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा, that is very important, और उसके साथ साथ बढ़ता भी रहेगा. बिकॉज एज ए सेड कि हम लोग किसी भी कचरे कंपनी में फालतू में पैसा लगाते नहीं है, ना लगाएंगे, कुछ भी हो जाएगा. So if anyone is interested, you know, for the next 2 days, we are very happy to provide this special discount of 25%. Just use this Omkara 25 code in capital letters for availing this, right? Sure. I think this is really exciting and super helpful for people who have been looking at Omkara small cases for a while, and I think this is a great opportunity for them to be part of this journey. So maybe a last question to before we wrap up, and picking up from your last conversation about as a country, if there is potential, I think we should go for it. So what is your view, Varinder bhai? One of the investor is asking why India isn't a global manufacturing hub, right? So I understand it's a journey we have started now, but despite being the fastest growing large economy,
why it has not been able to attract multi-billion-dollar investments from large MNCs in manufacturing facilities? अरे दोस्त, पता है क्या है राकेश भाई, अपने को हमेशा अच्छा लगता है अपने को बड़ा बड़ा बोलना, एंड टू बी ऑनेस्ट इज वी आर ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी यार। हम लोग कितने कुछ भी नहीं है हम लोग यार, क्योंकि जिस देश में टैक्स टू जीडीपी रेशियो 3-4% है यार। सो किसी को ये बोलना सब कुछ बहुत आसान है। चाइना चाइना बना बिकॉज चाइना ने बहुत काम किए, ठीक है। आज मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्सटाइल वालों से किसी से पूछ के देखो, क्योंकि हम लोग 16 बिलियन 15-16 बिलियन पे 10 साल से अटके हुए हैं। क्यों अटके हुए हैं? किसने सोचा नहीं बॉस। वो 10-12% का बांग्लादेश को एफडीआई का फायदा मिल गया, तो सारे के सारे उनसे कपड़ा लेते थे। क्यों? अभी गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि यार ये क्या किया फालतू में हमने। सो ऑल दीज रियलाइजेशंस आर कमिंग इन, एंड बॉस आज यू थिंक अबाउट दिस ना, इफ यू आर मोदी जी, यू अंडरस्टैंड कि बॉस आज मेरे से मतलब इस देश को इस टाइम से बेहतर टाइम नहीं है ताकि लोग हमें देखेंगे। हमें क्या करना है? हमें पॉलिसी यूज करनी है, हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, हमें लेबर लॉज हुआ, लैंड लॉज हुआ करना है, वो सब कर रहे हैं, पीएलए स्कीम्स निकाल रही है, सब कर रहे हैं। बट लोगों को बोला एफटी करना है, एफटी करते हैं, चलो ठीक है। सो ये हो रहा है, बट वी आर स्टिल वेरी स्मॉल, वी आर स्टिल वी आर नथिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट कि यार आगे जाके हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। A lot of challenges are there, but the good thing is that the government is doing that right now, and they have been thinking for the last many years. There's a long journey to go. जैसे 3% है वर्ल्ड जीडीपी के, यार हम लोग कोई बहुत ऐसे बड़े नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि वो चाइना जो 50-60% ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग यू नो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उससे हम लोग सब ले लेंगे। दैट विल बी वेरी नेव टू से कि वो हो जाएगा। Even if we are shifting what 5%, I think it will be massive improvement for this country. And as I said, it is a pivot, it is a big change. ये 60 साल के बाद चेंज आएगा बॉस, ये आज से नहीं 60 साल के बाद चेंज आएगा। आप और मैंने देखा कि वी वर ओनली एग्रीकल्चर इकोनॉमी, 60 साल से हम लोग 60% एग्रीकल्चर से आता था। ये कब आपने सुना? मुझे बताओ। लास्ट 50 साल से सुना कि गवर्नमेंट बोलती है आत्मनिर्भर हो जाएगा। भाई मोदी जी जाके हमेशा बोलते हैं आत्मनिर्भर करो। अभी सारे के सारे भाग क्यों भागते हैं कि चलो ठीक है जी, कभी किसी का इन्वेस्टमेंट लेके आओ, वो सिटी ग्रुप हुआ, सब कुछ हुआ, सब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। आपने देखा सैमसंग हुआ, एप्पल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे इंडिया में कर दो। सो ये कभी नहीं हुआ था, ये अभी होने वाला है, तो ये हो रहा है अभी। बट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वी आर ऑन द राइट पाथ, बट दिस सेक्टर कैन बिकम वेरी बिग, दैट इज व्हाट वी क्लियरली बिलीव इन। Sure. I think this was super helpful, Varinder bhai. So I'm sure you have already concluded it, but still, any parting words for listeners? I think we had a large number of listeners, and of course, people can always watch the video later as well. But yeah, I think that's all from our side. Varinder bhai, एक ही चीज बोलना चाहूंगा राकेश भाई कि एक चीज जो मुझे सिखाई थी राधा कृष्ण जी ने, कि पैसा तब बनता है जब फेथ होता है। सो अगर आपको फेथ नहीं है तो प्लीज पैसा मत डालिए। अगर आपको इस देश पे फेथ है और लगता है कि ये देश आगे बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग उसको थोड़ा सा आगे लेके जाएगा, कंट्रीब्यूट करेगा उस देश के लिए, तो उसमें पैसा डालिए। अगर फेथ के बिना पैसा डालोगे तो आप लोग छोटे उन चीजों में फंस के रह जाओगे, आप कभी बड़ा पिक्चर नहीं देखोगे। बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा पिक्चर देखना पड़ता है, और वी फोकस कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है, बिकॉज ये अगले 2-3 साल में कितना पैसा बनेगा हमें भी पता नहीं है। बट आपको फेथ होना ही चाहिए। अगर फेथ नहीं है तो ऑनेस्टली देन देयर इज नो नीड टू कम टू एनीवन, मतलब किसी की सेक्टर में भी जाने के लिए। बट यू हैव टू रियलाइज कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग ऑन द ग्राउंड, एंड दैट इज व्हाई दिस सेक्टर कैन बिकम वेरी बिग। sure, great. Thanks a lot. Yeah, Varinder bhai, sorry. Thank you, Rajesh ji, thank you Omkara, and thank you smallcase everyone, and thank you everyone for listening to me. And thank you everybody for joining in such a large numbers on a Friday evening, and wish you a great weekend. And I think next week is also some holidays, so have a great festive season as well. Thank you and good night. Thank you. आपकी टक 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 की आवाज आती रहती थी। बस यही मैं टाइप कर रहा था एक्चुअली।